students, welcome to the class. How are you all? Hope you are fit, fine, and doing great. And I'm sure you are excited to learn with me. So, myself, Divyani Shukla, your SST teacher, and today I'm going to teach you a very new chapter. Chapter number 3, Save the Environment. So, what is environment? Everything we see around us is our environment, whether it is living or नॉन लिविंग. जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे लिविंग या नॉन लिविंग, वो सब हमारा एनवायरमेंट है. वाई वी नीड टू सेव आवर एनवायरमेंट? बिकॉज इट प्रोवाइड अस everything we need to live, like air to breathe, water to drink, and food to eat. So there is a need to protect it and maintain it by planting more trees. So let's begin with this chapter. Build up, identify the living things and encircle them. You have to identify the things which is living and you have to encircle them. Like in the first picture you can see, is car a living thing? No, so you will not encircle it. Earthworm is a living thing? Yes, so you will encircle it. Like this you can do the rest of the remaining. Moving to the chapter, our planet Earth is a beautiful place. It gives us air to breathe, water to drink, food to eat, and a home to live in. But the Earth is getting sick because of pollution, waste, and careless actions. We need to take care of it just like we take care of our homes. Saving the environment means protecting the air, water, soil, plants, and animals around us. So हमारी अर्थ एक ब्यूटीफुल प्लेस है. इट गिव्स अस एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट. सो देयर इज अ नीड टू प्रोटेक्ट इट. और हमारे कुछ ह्यूमंस केयरलेस एक्शंस की वजह से या फिर पोल्यूशन की वजह से हमारी अर्थ जो है वो खराब होती जा रही है, पोल्यूटेड होती जा रही है. इट इज गेटिंग सिक. सो वी नीड टू टेक केयर एक्शंस. जैसे हम अपने घर की देखभाल करते हैं, लाइकवाइज वी नीड टू सेव द एनवायरमेंट. सेविंग द एनवायरमेंट मतलब प्रोटेक्टिंग द एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस. नेक्स्ट हेडिंग, व्हाट इज द एनवायरमेंट? जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, इज एनवायरमेंट. The environment is like a big web where everything is connected. If one part gets hurt, it affects everything else. For example, if the air gets polluted, it can harm animals, plants and peoples. तो environment जो है वो एक बड़े से web की तरह है. अगर environment का कोई एक भी part affect होगा, it will affect rest of others also. Suppose if air gets polluted, अगर air pollute होगी तो हमारी जितने भी living species है, like animals, human beings, plants, वो सब भी affect होंगे. Next heading, why is the environment important? Because it provides us everything we need to stay alive. The environment is important for us because it provides everything we need to survive and thrive. Here are some reasons why the environment is essential. So some reasons are given here why our environment is essential. First reason, it provides oxygen and air. Trees and plants produce oxygen which is necessary for us to breathe. So trees और plants से हमें ऑक्सीजन मिलती है जो कि हमारे necessary यानी जरूरी है breathing के लिए. Next, gives food and water. The environment supplies us with food from plants, animals and water from rivers and lakes. तो environment जो है वो हमें food provide कराता है from plants and from animals also, and it provides us water from lakes and rivers. Third, supports life. It is home to all living beings including humans, animals and प्लांट्स. तो इन्वायरमेंट जो है वो घर है सभी लिविंग बींग्स का, लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेक्स्ट इज ऑफर्स नेचुरल रिसोर्सेज. इट प्रोवाइड्स मटेरियल लाइक वुड, मिनरल एंड फ्यूल दैट वी यूज इन अ डेली लाइफ. तो जितने भी हमारे नेचुरल मिनरल्स हैं, कुछ मटेरियल्स हैं जैसे कि वुड, फ्यूल, वो भी हमें इन्वायरमेंट से ही मिलते हैं. नेक्स्ट इज सॉइल. सॉइल हेल्प्स प्लांट्स ग्रो एंड प्लांट गिव्स अस फूड. सॉइल भी हमें किससे मिलती है? इन्वायरमेंट से, और उसी से हमें फूड मिलता है. सो नेक्स्ट, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स. फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड वेटलैंड अब्सॉर्ब्स फ्लड वाटर्स. तो ये नेचुरल डिजास्टर्स को भी, नेचुरल डिजास्टर से हमें प्रिवेंट करता है. कैसे? फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे वो सॉइल इरोजन को रोकते हैं और जो वेटलैंड्स हैं वो फ्लड वाटर्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. इफ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, इट विल बिकम डर्टी एंड अनहेल्दी. दिस कैन मेक पीपल एंड एनिमल्स सिक एंड डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर. तो अगर हम अपने एनवायरमेंट की टेक केयर नहीं करेंगे, वो डर्टी और अनहेल्दी हो जाएगा सभी लिविंग स्पीशीज के लिए जो कि अर्थ पे रहती हैं, जिससे पीपल, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स भी बीमार पड़ सकते हैं और नेचर की ब्यूटी भी डिस्ट्रॉय होगी. नेक्स्ट हेडिंग, पोल्यूशन. Pollution is when harmful things get into environment and make it dirty or unsafe. These harmful things are called pollutants. Pollution can hurt people,
animals and plants and even the air, water and soil. So pollution क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारे environment में आके उसे dirty बना देती है या unsafe बनाती है, that is called pollution. और जो वो harmful things होती हैं उन्हें हम pollutants कहते हैं. Pollution can hurt people, plants and animals and human beings. Even the air, water and soil also it can harm. Now there are different types of pollution. So there are 4 main types of pollution. These are A. Air pollution, B. Soil pollution, C. Water pollution, D. Noise pollution. Now let us discuss. Let's learn about each type in detail. First is air pollution, by which our air gets polluted. Air pollution happens when harmful gases and smoke mixes with the air we breathe. This makes the earth dirty and unhealthy. तो एयर पोल्यूशन तब होता है जब भी कोई भी हार्मफुल गैस या पोल्यूटेंट हमारी एयर के साथ मिक्स होके उसे डर्टी और अनसेफ बना देता है. द एयर वी ब्रीथ, दिस मेक्स द एयर dirty and unhealthy. Next, causes of air pollution means how air pollution is caused. How it is caused? Smoke from factories and power plants. जो भी smoke निकलती है हमारी factories और power plants से उससे होता है. Smoke from cars, buses and trains. Burning rubbish or plastic. If we burn any kind of rubbish or plastic, by which also that is air pollution caused. So these are the 3 main causes by which air pollution is caused. Effects of air pollution. What are the effects of air pollution on living species? Let's see. It can make people sick, causing cough, cold and breathing problems. ये लोगों को बीमार कर सकती है जिसकी वजह से उन्हें कफ, कोल्ड और ब्रीदिंग प्रॉब्लम से सफर करना पड़ सकता है. It can also harm animals and plants too. It makes the sky look hazy and dirty. A sky also looks hazy and dirty. So these are the effects of air pollution. How to reduce air pollution? कैसे air pollution को कम किया जा सकता है? We should walk, cycle or use public transport instead of cars. So if we have to travel for shorter distance, we should do it by walking or we can use cycle. We should plant more trees to clean the air. We should avoid burning rubbish or plastic. So these are the 3 ways by which air pollution can be reduced. Moving to the next pollution, which is water pollution, by which our water gets polluted and becomes unsafe for drinking. Water pollution happens when dirty or harmful things gets into rivers, lakes or oceans. This makes the water unsafe for drinking and harm animals that lives in the water. तो वाटर पोल्यूशन कब होता है? जब कोई भी डर्टी या हार्मफुल सब्सटेंस हमारे रिवर्स, लेक्स या ओशंस में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वाटर जो है वो अनसेफ हो जाता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी, और जो भी एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं उसके अंदर वो उनको भी हार्म करता है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन. रबिश थ्रोन इनटू रिवर्स एंड लेक्स. जो भी हम रबिश थ्रो करते हैं रिवर्स और लेक्स में उस वजह से हो सकता है एयर पोल्यूशन. डर्टी वाटर विच कम्स आउट फ्रॉम फैक्ट्रीज. ऑयल स्पिल्स फ्रॉम शिप्स, जो शिप से ऑयल स्पिल निकलता है. केमिकल्स फ्रॉम फार्म दैट वॉश इनटू एयर, जो भी केमिकल्स निकलता है फार्म से. तो दीज आर द वेज बाय विच एयर पोल्यूशन इज मेनली कॉज्ड. What are the effects of water pollution on human beings or living species? Fish and other water animals can get sick or even they can die. People can get sick from drinking dirty and unhealthy water. It can make the weather look dirty and smell bad. How we can reduce air pollution? We should not throw rubbish into water. तो हमें किसी भी तरीके का रबिश वाटर में नहीं फेंकना चाहिए. We should use less plastic. We should conserve water to save it. तो हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए. We should clean up rivers and lakes. हमें लेक्स और रिवर्स को एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्लीन करते रहना चाहिए. Next is soil pollution. Soil pollution happens when harmful chemicals or waste get into the ground. This makes the soil unhealthy for plants to grow and can harm animals that live in the soil. तो soil pollution तब होता है जब कोई भी harmful chemicals या waste हमारे ground में mix हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी soil unhealthy हो जाती है plants grow करने के लिए, and also they can harm this unhealthy soil can harm animals that live in this soil. Now causes of air soil pollution. What are the causes? Using too many chemicals on farms. If we use too many chemicals on farms, by which soil pollution is caused. Throwing rubbish on the ground, spilling oil or petrol. So these are the 3 main causes of soil pollution. Effects of soil pollution. Plants cannot grow well in polluted air. First reason, जो plants हैं वो हमारी polluted और unhealthy soil में grow नहीं करेंगे, जिसकी वजह से shortage of food भी हो सकती है. Animals that live in the soil can get sick or they can even fall, die.
इट कैन मेक फूड अनसेफ टू ईट, यानी हमारा फूड जो है वो खाने के लिए अनहेल्दी और अनसेफ हो जाएगा. हाउ कैन वी रिड्यूस सॉइल पोल्यूशन? वी शुड नॉट लिटर, always use a dustbin. So we should not litter, we should not throw any waste, we should always use a bin. We should recycle paper, plastic and glass. We should use natural fertilizers instead of chemicals on farms. तो हमें natural fertilizers का use करना चाहिए. Next is noise pollution. Noise pollution happens when there is too much loud noise. This can hurt our ears and disturb animals. तो noise pollution तब होता है जब हमारे बहुत ज़्यादा too much loud noise होती है जो कि हमारी ears को hurt कर सकती है and वो animals और किसी भी human species को या living species को disturb भी करती हैं. Next is causes of air pollution. How air pollution is caused? By loud music or TV, noise from vehicles like cars, buses and aeroplanes, construction work with loud machines. So these are the three ways by which noise pollution is caused. Now effects of noise pollution. It can cause headaches and stress. Noise pollution की वजह से हमें headache हो सकता है, stress हो सकता है. It can disturb animals, birds and human beings. It makes it hard to concentrate or sleep, जिसकी वजह से हम अच्छे से सो भी नहीं पाते हैं. How can we reduce noise pollution? We should keep the volume of TV and music low. We should use quieter machines and vehicles. We should plant more trees. हमें ज़्यादा trees plants करनी चाहिए ताकि noise को हम block कर सकें. Now it's the time of act and learn. I stand tall and clean the air, but if you cut me down, I won't be there. Who am I? So I am tall and I clean the air. कौन air को clean करता है? What will be the answer? The answer will be plants. Likewise, you can do the remaining two. Moving to the next topic, which is why is pollution a problem? तो pollution problem क्यों है? Because it harms our environment, and environment is very necessary for us. Why so? Because it provides us every necessary things we need to stay alive. Pollution is a big problem because it harms the environment and all living things. It can make people and animals sick, destroy plants and damage the air, water and soil. If we do not stop pollution, the earth will become a dirty and unhealthy place to live. तो pollution एक बहुत बड़ी problem है क्योंकि वो हमारे environment को harm करती है और जितनी भी living species उस पर रह रही हैं उसे भी. ये लोगों को, animal beings को sick कर सकती है और even they can die in this unhealthy environment. It can destroy plants and damage the air, water and soil. अगर हम soil pollution को नहीं रखेंगे तो अर्थ जो है वो हमारी एक dirty और unhealthy place बन जाएगी. Every little action we take can help save the environment. By following simple steps, we can make our planet a healthier and cleaner place to live. तो हमारा जो एक छोटे से एक्शन से भी हम अपने इन्वायरमेंट को बचाने में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं वर्ल्ड में. तो वी कैन फॉलो सम सिंपल स्टेप्स जिससे हमारा प्लैनेट एक हेल्दियर और क्लीनर प्लेस बन सकता है. So there is a need to protect our environment. Now, I hope you have understood the topics. Moving to vocabulary. First is recycle, using things again to reduce waste. Recycle यानी कि चीजों को बार बार यूज करना, वेस्ट कम करने के लिए. Pollutants, harmful things that cause pollution. Pollutants यानी ऐसी harmful things जो कि pollution cause करती हैं. Conserve, to save and protect nature. Conserve यानी nature को बचाना. Now let us recall what we have learned in this chapter. It gives us air to breathe, water to drink, food to eat and home to live in. ये सब हमें कौन देता है? Environment. Environment is everything we see around us, either living or non-living. Pollution is when harmful things get into environment and make it dirty or unsafe for every living species living on the planet Earth. Air pollution happens when harmful gases and smoke mixes with the air we breathe. Now, exercise time, think and answer. First is take the correct option. What causes air pollution? A. Smoke from cars. B. Flying kites. Or C. Planting trees. Option number A. What helps clean the air? Cars, factories or trees? So, who cleans the air? Trees. What causes water pollution? Throwing rubbish into rivers, cleaning up lakes or drinking water. So, what causes air pollution? Throwing rubbish into rivers. Which type of pollution is caused by loud sound? Air pollution, water or noise pollution? Option number C. Now, next exercise. Fill in the blanks using the words given in the box. We should plant more dash to clean the air. We should plant more plants. We should dash paper and plastic to reduce waste.
We should recycle. Loud sound causes noise pollution. Throwing rubbish into rivers makes the water dirty. Last, we must dash water to save it. We must conserve water. Next exercise, tick for the true and cross for the false statement. Pollution makes the environment cleaner? No. False. We should use public transport to reduce air pollution? Yes. Oil spills do not harm water animals? No, this is incorrect. Fourth, loud sounds can disturb birds and animals too? Yes, this is true. So you will put a tick in front of them. So thank you students. That's all for today. I hope you have understood it well. Now we'll meet in the next class. Till the time, keep learning, keep doing great. Bye-bye students.